Welcome to the Fashion Pattern Lab. Today I am using glazed cotton fabric for lapped seam. A lapped seam is a very easy to construct, which is typically used with fabric that do not fray, such as leather and fleece. Let's start with the planning process. Place the first layer of the fabric and fold it upward by 1 cm. Next, place the second layer of the fabric and fold it downward by 1 cm and overlap both layers. Now stitch along the top of both corners. Yes, 2 stitch lines. Proceed to the construction process. These are 2 layers of the fabric and this is wrong side of the fabric. Now mark 1 cm seam allowance on both layers. और फिर दोनों लेयर्स की सीम अलाउंस फोल्ड करके क्रीज बना लेंगे, लेकिन एक लेयर की सीम अलाउंस रॉन्ग साइड के टूवर्ड्स फोल्ड होगी और दूसरी लेयर की सीम अलाउंस राइट साइड के टूवर्ड्स फोल्ड होगी. दिस इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. गारमेंट में ये सीम यूज करते टाइम क्रीज बनाने की जरूरत नहीं होती. डायरेक्ट फैब्रिक के लेयर्स को इस तरह रॉन्ग साइड टू रॉन्ग साइड फेस करके रखेंगे और ओवरलैप कर देंगे. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा. Now put a top stitch. Let's head to the sewing machine. This is wrong side of the fabric. अब बहुत carefully एकदम कॉर्नर पर स्टिच करेंगे. Make sure to use back tack at the start and at the end of the seam. Now turn the fabric to the right side and follow the same steps. Stitch at the corner. And this is done. Look at the finishing. Also, there is no need for overlocking this seam. If you are passionate about sewing, follow Fashion Pattern Lab on Instagram for daily sewing updates. Thanks for watching Fashion Pattern Lab.